Good evening, Arpita and others. Good evening, sir. କେତେ ଜଣ ଜଏନ୍ କଲେ? 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଖାଲି 4 ଜଣ 5 ଜଣ ଥିଲେ ନା ଆଉ ଜଣ କିଏ ଜଏନ୍ କଲେ? ଓକେ, ଆଉ ଅଲଗା ଅଦର୍ସ ଜଏନ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ ଜଣେ ଦି ଜଣ। ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ମାନସ ସାର୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍। ହଁ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ହଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ପିଲା କେହି ଜଏନ୍ କରୁନଥିଲେ। ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଓ। So, good evening to all. Today's topic will shift to the second and third chapter. We'll cover that. That is important. That is application of ICT in governance, in administration. What are the different kinds of applications that we find in different kinds of administration and administrative management and governance. So before going to do that, we must understand what is the background of application of ICT, what are the objective and what are the outcomes. So this has been defined as the role of ICT, role of information and communication technology, that is to enhance the quality and delivery of public services. So if you find what is the objective of ICT in governance, or use of ICT in governance, the role of ICT in governance, you will find one is enhance the quality and delivery of public services. You know, public services I have explained yesterday. So any service given by the government, given by the public authority to the citizens is called a public service. So earlier delivery of public service was very difficult and time taking, and that was undergoing
corrupted methods, there is no accountability, etc. etc. So, use of ICT or application of ICT or role of ICT in administration in e-governance actually increases the quality of the public services and its delivery. You get it quickly, simple. Second is the citizen government interface or interaction. Earlier, what was happening? When a citizen was going to meet the administration, suppose take district administration or block, even block administration, he was not allowed. Did not have any free access. He did not have any entrance to collector's office or BDO office or secretary's office. So the citizen government interface was very limited, was partisan. Citizens are not allowed to put their grievances. So there are a lot of difficulties in that. So now with the use of ICT, citizen can access government data, can apply government benefit, can apply for public services, can have a complaint for public services. Earlier we have complaint boxes in different offices. Now you can make an online complaint. Recently, there was a website by Election Commission of India to register complaints. This is one of the best examples of citizen administration interface. So if you observe any kind of violation of the moral code of conduct or electoral rules during electoral process, political parties and candidates can approach, also common people can approach. This is a gross misuse of power or moral code of conduct violation, etc. So that's why with the use of ICT, a role of ICT, there is a growth or there is an increasement in the quality of citizen government interaction or interface. Third is there is a growth in the people's participation in governance. Earlier there is no scope of participation of people in the governance processes. So now, as I explained today, there was digital participation or scope of digital participation with the use of ICT. So ICT created a scope, created an ambience or environment that is digital environment in which people can participate in the governance process. They can give suggestions, they can give feedbacks, they can criticize, they can complain, they can suggest through online methods, that is through the use of ICT. Then last is you have access, more access, and you have to complain the disadvantages in governance. So you have outreach program. That means you have more access to the government data, government policies, government informations, applications of ICT in government, etc. So now let us come to, after this background, let us come to role of ICT. So first is information browsing. You know browsing, all of you must be aware of the browsing. I will give a definition that is also in your book, that is G. Machoni. He has a very good inclusive definition that best explains the meaning of browsing. What is browsing? Browsing is an exploratory information seeking strategy that depends upon serendipity, especially appropriate for ill-defined problems. The problems, those who are not defined clearly. In this case, this information browsing is very important. And for exploring new task domains, new areas, new domains, new scopes. That means by browsing a website, browsing information, you can understand the problem, you can understand the challenge, you can understand the issues. That is most important because when you apply for, you are going to apply ICT or use your ICT in governance as a citizen, then browsing is very important. Because you have remote access systems to information database on your personal computers, you can have access to that. If you have net, if you have connectivity, or you can create a password, you can create a link, you can create a ID, and you can apply that. Suppose you are going to Mumbai, or you are going to Delhi or Chennai. There are government guest houses that is called Odisha Bhavans.
So you can browse Home Department website. Then you can find what is the availability of rooms. You can apply online, upload the documents. You need not go to the Home Department. Earlier, what is happening? You have to go to the Home Department to apply for a reservation of room in these cities. So there are categories. In which category you are categorized? Category A, government servants. Category B, category C, etc. So under your category, you will register and you will apply for Home Department booking for Odisha Bhav. That is one of the examples I am giving. Information browsing. So you get the information after browsing, then you can apply. Okay, this is one of the most important aspects of role of ICT in administration. Second is electronic publishing and dissemination. I have already told you about dissemination, giving information. What is electronic publishing? That means e-publishing. You have a database, online database. You have e-resources. You have online information transactions. You have digitalized services. That is called electronic publishing. Now you can search in Google everything you want. Suppose you need a famous classic book or poem or whatever. You can search that. That is digitally published. Okay. So you need not go for hard copy publishing. That is digitally published. You can get that through electronic publishing and dissemination. That means informations, databases, literature, etc., that are published electronically and then disseminated. You can have free access to that. This is one of the biggest contributions of ICT in today's world, to get the information at the click of a mouse. So everything you will find. You are searching in Google. Suppose you are studying this paper, MPA-17, that is e-governance. Any chapter, any topic you can get and you can find in the databases of IGNO. I just gave two examples. One is the database of IGNO, another is the Home Department Odisha for your booking in different cities. Then modeling and simulation. You know simulation. What is modeling and simulation? That is a level of understanding of the interaction and the parts of a system. You are suppose the best example is, suppose there is a prediction of cyclone. How these cyclones are predicted? There are different models. America predicted within 4 days cyclone will hit Gopalpur sea beach. Then Indian prediction says it will be hit 3 days. Then other prediction, they are predicting these possible cyclones or natural calamities or disasters by a system that is called simulation. So simulation is a model by which natural disasters can be predicted, particularly cyclones, whether this was cyclone or severe cyclonic storm, etc., etc. So meteorological department, Indian meteorological department, world meteorology department of different countries, they predict and give information pass on to India, or where there is cyclone. Or if it will hit Bangladesh coastal lines, then India and other countries will pass information to them. So this is done under the modeling and simulation. So this is made by using ICT. Modeling and simulation is a model by which, by the use of ICT, we can predict the possibility of a cyclone, natural disasters particularly. So this is most appropriate for meteorological department for preparation of the state and other agencies or community to face natural disaster challenges like cyclone. Students from Odisha, they are very acquainted with this. Then you have online business and government transactions. You have, I have already explained to you yesterday that when you are paying for admission fee online, that is government transaction online or online business. Online business is common. You are going to Flipkart, you are going to Amazon, you are going to Myntra. These are in private sector. And when we are talking of governance in government sector, you don't need to go to offices physically. You can pay online. In banks, challans, other everywhere you have SBI, you have Phone Pay, you have Google Pay. Then there are other websites of the government. You can pay directly there. So another example is the Bhulek.
Bhulekh is the land records made available by many state governments, particularly Odisha. Odisha has a website that is Bhulekh. Your entire land record is there. You need not go to RI office or Tahsil office or collector office unless you have a problem or you need a change. Otherwise, you can get the data of your land through this. Then you can make payment for telephone bills or any government offices through internet. That is called online business and government transactions. So today's most of the government transactions from the side of citizens, like paying taxes or paying certain fees or paying certain service charge, you can pay online the government. Then you have electronic conference. Now during Corona, we had online classes. Now I have an online class. We have a Google Meet that is called electronic conference. So now most of the conference you need not do it physically. Seminars or conference you don't need to go physically. Suppose somebody cannot come physically from foreign America, or I cannot go to Delhi to attend a conference, I can attend online. That is called a hybrid mode. So during Corona, classes were held online, meetings were held online, and now this has become the new norm, new mode, new standard. That is called a hybrid mode. Many of the delegates don't need to go there because that is expensive, time taking. So we are offered by ICT, that is whether it is Zoom or Google or Skype, we can attend conferences, meetings. That is called electronic conference or e-conference. Okay. So these are the various aspects of role of ICT. Then how they are applied? ICT is applied under various projects. One is database, relational database management systems, knowledge base, exploit system, then decision support systems, then GIS, geographic information systems, data capture, data integration, data modeling, and management information system, shortly called as MIS. Okay. So what is database? Database is information set with a regular structure. That means there is a structural pattern on a regular basis where data is kept, data is stored. That is called database. What happens when you have a database? When you have a database in a computer and it is open for public, everybody can have access to that. What are the data of a institution? What are the data of a government? What are the data of a university? What are the data of a department of a government? So there is a wide variety of databases. What kind of databases there can be? It can be a single file. It can be a large database. It can be a simple table. Suppose how many students have been admitted in last 10 years in an institution? Oh, there is a database, there is a table. In 2010, 5,000, 2011, 6,000, that is the simple database in a table. If you have a complex database, how it can be complex or large database? 5,000 students admitted in 2010 and 11. Then you have women students and male students. Then you have SC, ST, Dalit in terms of community or caste status, in terms of income. So that is a large database. That is called other peripheral electronic devices. So databases resembling modern versions were first adopted in the 60s. Okay, we adopted in the 60s. This is the example of database. Then you have relational database management systems. You have relational database management systems. Okay. So what is relational database management systems? When databases can be compiled using RDBMs or relational database management systems, it is called relational database management system. What will happen? It is possible to subject the database to queries for more informed decision making. You can get queries from there, so you can have more decision making, informed decision making. Unless one have knowledge, one cannot take a decision. Unless one have data, one cannot take a correct decision. So decisions are dependent on two factors.
one is data, another is the knowledge system. गोटे निष्पत्ति नेबे जो सरकार कौन डिपार्टमेंट कौन गुरुत्वपूर्ण पदपदवी से निष्पत्तिटा कौन हवा दरकार माने ज्ञानपूर्ण हवा दरकार तथ्य रहा दरकार तथ्य गुड़िक तुम इमिडिएटली जो पाई गोटे वेबसाइट रे यू आम कहे रोल ऑफ है तापर डाटाबेस यहाँ हूँ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम गोटे मैनेजमेंट सिस्टम टाक चलवाई डाटा दरकार डाटा को देखिकी प्रेडिक्ट करें ये टेक द एग्जांपल ऑफ नेचुरल डिजास्टर आम साइक्लोन कथा नवा जेआईएस सिस्टम रे आनिबा लास्ट 5 इयर्स रे जो साइक्लोन हेची तार स्पीड केते थिला हिट कला बेले केते डैमेज करथिला घर द्वार बा गछ वृक्ष इत्यादि एवं तार इंपैक्ट सिवियर थिला कि केते परिमाण थिला सेटा केते स्पीड रे आस्तला केते दिन रे आस्तला तार स्पीड कोन थिला पोस्ट रे आसी हिट कला तो सही डाटाबेस को कंपेयर करके बर्तमान साइक्लोन जोटा आसूची जो धरा जाए तार हेडा केते हिट करिवो ताको गोटे सिमुलेशन मॉडल रे जदि अधिका धरा जाए किछि पर 10% 20% 30% केते डैमेज करिवो सो दैट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बा स्टेट रो डिजास्टर मैनेजमेंट बा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एमाने कोन करिवे प्रिपेयर हे जिवे तांको लोक पठाइबे रिलीफ मटेरियल पठाइबे मशीन्स पठाइबे लोक मान को रेस्क्यू करिया पई बा सेइथरु जमी जीरो डेथ हम कार काजुआलिटी हम नहीं लोक मरवे नहीं ये डाटाबेसटा थिले गोटे डिसीजन नहीं हम दिस इज कंपैरेटिव और रिलेशनल डाटाबेस देन नॉलेज बेस एक्सपर्ट सिस्टम व्हाट इज नॉलेज बेस एक्सपर्ट सिस्टम नॉलेज बेस सिस्टम स्पोकन सच सिस्टम दैट यूज नॉलेज बेस टेक्निक्स जोड़ा ज्ञान भित्तिक कौशल प्रयोग करती ताको आमे कहूचे नॉलेज बेस एक्सपर्ट सिस्टम ओके सो ह्यूमन डिसीजन मेकिंग लर्निंग एंड एक्शन मनीष तो निष्पत्ति नब से लर्न करिवो इथरु ए डाटाबेस रु एवं एक्शन को जीवो इथरे क्वालिटी ऑफ सपोर्ट जोतरे सपोर्ट दिया जीवो तार गुणात्मक मान एवं जो प्रेजेंटेशन रहिवो एटा बेसी गुरुत्वपूर्ण सिस्टम रो कैरेक्टर बा नेचर को निष्पत्ति न द प्राइमरी गोल ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम इज टू मेक एक्सपर्टाइज अवेलेबल टू डिसीजन मेकर्स यार लक्ष्यटा कोन ना जो माने निष्पत्ति नउचंती तांको पाखरे एक्सपर्टाइज रहबा दरकार विशेषज्ञ गुण रहबा दरकार सेटा कोड मिलियो ना ये नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम रे मिलियो अर्थ आजिकली आउ पचरा जाउ नै मीटिंग करा जाउ नै बा मतामत निया जाउ दे हैव बिकम सेकंड वर्तमान मोस्ट इंपोर्टेंट है बिफोर डिसीजन मेकिंग व्हाट इज द नॉलेज सिस्टम अवेलेबल सेही संपर्कित नॉलेज सिस्टम ता कोन अछि हम सपोज ओडिशा गवर्नमेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट वांट्स टू मेक ए पॉलिसी गोटे नुवा निष्पत्ति नबो ये आउ 3-4टा यूनिवर्सिटी खोला दरकार अछि कि नहीं जीआर केते जीआर बुझी पड़छो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो केते पिला एडमिशन करूछन्ते हायर एजुकेशन ने केते पिला करि परुनांती जियोग्राफिकल को एरिया रे कम अछि को एरिया रे बेसी अछि यूनिवर्सिटी आवश्यकता अछि कि नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कोन अछि एवं जोटा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट सेटी केते फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट केते ई जो नॉलेज सिस्टम ता हमें पाइले नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम से थ्रू गोटे डिसीजन नहीं हम वेदर देयर इज ए नीड ऑफ यूनिवर्सिटीज आउ विश्वविद्यालय आवश्यकता ओडिशा अच्छी कि नहीं जदि अच्छी कोठी अच्छी को वर्ग पई अच्छी को अंचल पई अच्छी एटा गोटे नॉलेज बेस्ड सिस्टम रे हम डिसीजन नै हला तो नेचुरली कैलामिटी एग्जांपल देली गोटे एजुकेशनल नीड्स ऊपर एग्जांपल तापर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बा शॉर्ट टर्म तो कहते डीएसएस व्हाट इज दैट द सिस्टम दैट फैसिलिटेट एक्सपांड और एनहांस ए मैनेजर्स एबिलिटी to work with one or more kinds of knowledge are called DSS कौन एटा ताले हला जोटा फैसिलिटेट करूची गोटे मैनेजर जे मैनेज करूची मैनेजर बा एग्जीक्यूटिव रो काम करिवार दक्षता गोटे नॉलेज नै कि तामर ता गोटे नॉलेज पाइबा द्वारा से लोकर मैनेजर रो काम करिवार दक्षता बढ़ुची सेटा कहूची डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ता अर्थ जने मैनेजर डिसीजन नेला बेले ताकू जो सिस्टम टा सपोर्ट करूची डाटाबेस रु सेटा को आउची डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ओके सो अंडरस्टूड so these are specific class of computerized information system that support decision making activities that there are many kinds of activities for a manager suppose you take the example of finance a manager has to take a financial decision so regarding financial decision there is a specific support system or knowledge system or a database that is called decision support system that decision को जो system टा support करूची ता नाटा ला DSS
ତେଣୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ସମାନ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କାଟେଗୋରୀ କି ଫିଲ୍ଅପ୍ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାରଟା ଯୋଉଥିରେ ତମେ ଧର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ବା ଫିନାନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ବା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛନ୍ତି, ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଡିଲ୍ କରାଯିବ, ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କୁ କାମ କେମିତି ଆଦାୟ କରାଯିବ, ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଡିସିସନକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଯୋଉ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ଡିଏସ୍ଏସ୍। ଓକେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଗଲା ଡିଏସ୍ଏସ୍ ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଆସିଲା ଜିଆଇଏସ୍, ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ସିଷ୍ଟମ। So what is GIS? GIS is a computer-based system for the manipulation and analysis of the spatial information in which there is an automated link between the data and their spatial location. ତା ଅର୍ଥ ସ୍ପାସିଆଲ ଲୋକେସନ ଯୋଉଠି କୋଉଠି ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଅଛି, ଲୋକେସନଟା କୋଉଠି ଜିନିଷଟା ହଉଛି। ଧର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମରୁଡି ଅଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବନ୍ୟା ହଉଛି, ତାର ତ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲି ସେ ଡାଟାରୁ ଜଣା ପଡିଯିବ ଜିଆଇଏସ୍ ରୁ ଯେ କେତେ ପରିମାଣରେ ହେଇଛି, କଣ ହେଇଛି। ଧର ଗୋଟେ ସଏଲର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଣ, ସେଠି କି ପ୍ରକାର ଚାଷ ହେଇପାରିବ, ତାର ହାଇଡ୍ରୋଲୋଜି କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଣ, ଆର୍ଥ କ୍ୱେକ୍ ହେଲା ବେଳକୁ କାହିଁ ସେଠି ହଉଛି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ହଉନି। ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଜିଆଇଏସ୍ ଡାଟା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିଆଇଏସ୍ ଡାଟାଟା ହେଲ୍ପ କରିବ ବିଟୱିନ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କେସରେ। ସପୋଜ ୟୁ ହାଭ୍ ଏ ପ୍ଲାନ୍, ତମର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତମେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ বা ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନେବ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଚାଷ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡର କ୍ୱାଲିଟି ବା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବା ଏତିକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ଏଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚାଷ ହେଇପାରିବ, so that peasants will be benefited, ଚାଷୀ ମାନେ ବେନିଫିଟ ହେବେ। ତ ଏଇଟା ଜିଆଇଏସ୍ ଡାଟା କ୍ୟାପଚର ଆସିବ, ଜିଆଇଏସ୍ ଆଗେ ଡାଟା କ୍ୟାପଚର କରିବ। ତେଣୁ ଡାଟା କ୍ୟାପଚରଟା କଣ ନା, ଏଥିରେ ଡାଟାଟା ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ହେଇପାରିବ, ଫିଲ୍ମରେ ହେଇପାରିବ, ଡିଜିଟାଲି ଡାଟାଟା କ୍ୟାପଚର ହେଇକି ଷ୍ଟୋର ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲି ଡାଟା ଷ୍ଟୋର ହବା, ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିବା, ଏଇଟା ତମେ ଏଇ ୱାର୍ଡ ଗୁଡା ବୁଝିପାରୁଛ ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ, ଜିପିଏସ୍ କ୍ୟାମେରା ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଟା ଗ୍ଲୋବାଲ ପୋଜିସନିଂ ସିଷ୍ଟମ। ତମେ ଯୋଉଠୁ ଫଟୋଟା ଉଠେଇଲ ତାକୁ କେହି ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସପୋଜ ନାଓ ଆଇ ଏମ୍ ଟେକିଂ ଏ କ୍ଲାସ୍ ହିୟର ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, I will take a snap or photo of my class in a GIS GPS system. ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ କଲି ଗ୍ଲୋବାଲ ପୋଜିସନ ସିଷ୍ଟମରେ, ଏତିକି ଅକ୍ଷାଂଶ ଦ୍ରାଘିମାରେ ମୁଁ ମୋର ଫଟୋଟା ନେଲି, ଫଟୋଟା ନେଲା ବେଳକୁ ଜଣା ପଡିଲା 1 ତାରିଖର ଏତେଟା ବେଳେ ମୁଁ ଇଗ୍ନୋ କ୍ଲାସ କରୁଛି। ବୋଧେ ନର୍ମାଲ ଫଟୋଟା ନେଇଥାନ୍ତି, ତାର ଟାଇମିଂ ନାହିଁ, ଡେଟ୍ ନାହିଁ, ସେଠି ଜଣା ପଡିନଥାନ୍ତା। ଜିପିଏସ୍ ରେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତ ଜିପିଏସ୍ ରେ ଯୋଉ ଡାଟାଟା ଷ୍ଟୋରେଜ ହବ, କ୍ୟାପଚର ହବ, ସେଇଟା ୟୁଜ କରିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଡାଟା ବେସ୍। ତାପରେ ଡାଟାଟାକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରିବ, ମିଶେଇବ, ତାକୁ ସିଷ୍ଟମାଟାଇଜ କରିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଡାଟା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ। ତାପରେ ଡାଟାଟାକୁ ମଡେଲିଂ କରିବ, ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଆମେ ପାଇଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ 3 ଡାଇମେନସନାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ, ଆର୍ଥର ସରଫେସ୍, ସବ୍ ସରଫେସ୍, ଆଟମସ୍ଫିୟର, ଏଥିରେ ଆଣିବ। ଧର ଯୋଉ ମୁଁ ଏଇଟା କାହିଁକି କହୁଛି, ଆମେ ଯୋଉ କୃଷି ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ନଉଛୁ। ଦେନ୍ ଡାଟାବେସ୍ ଭ୍ୟୁ, ମ୍ୟାପ୍ ଭ୍ୟୁ, ମ୍ୟାପରେ ଦେଖିଲେ, ମଡେଲ ଭ୍ୟୁ। ସୋ ଜିଆଇଏସ୍, ଏଇ ଯୋଉ ଜିଆଇଏସ୍ ବା ଜିପିଏସ୍, ଏଇଥିରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କୋଉଥିରେ ନା, ଯୋଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିସିଜ ଅନ୍ ନେଚର ଅର୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର, କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ, ଏଇଥିରେ ଏଗୁଡା କାମ ଦବ। ଏଇଟା ରୋଲ ଅଫ ଆଇସିଟି ଇନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଏମ୍ଆଇଏସ୍। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଏମ୍ଆଇଏସ୍? ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ ସିଷ୍ଟମ। MIS ଟା କଣ? It is a study. What kind of study? Na design, implementation, management and use of information technology applications in organizations. संगठन मानकरे, ऑर्गेनाइजेशन मानकरे ये जो आईसीटी अप्लाई हबो बा सूचना प्रजुक्ति विद्या प्रयोग हबो, तार केमिति प्रयोग हबो, केमिति परिचालन हबो, केमिति व्यवहार हबो, एंटायर सिस्टम टो हमें कहूचे मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम। तार अर्थ केमिति मैनेज करा दियो, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ଏଇଥିରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଟର କିନ୍ ର, ସେ କହୁଛି ଏମ୍ଆଇଏସ୍ ଟା କଣ? ହାଉ ହି ଇଜ ଡିଫାଇନିଂ ଏମ୍ଆଇଏସ୍? ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଡିଜାଇନ, ଡେଲିଭରି ଆଣ୍ଡ ୟୁଜ ଅଫ ଇନଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଅର ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଇନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ। So briefly or in very short and simple terms, MIS is the effective design, delivery and use of information systems in organizations. संगठन मानकरे एई जो सूचना व्यवस्था, यार डिजाइन केमिति हबो, याकु डेलीवरी केमिति दिया जिवो एवं केमिति परिचालन हबो, दैट इज कॉल्ड MIS, मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम। अंडरस्टूड? Then what is the objectives of MIS? It provides managers with structured periodic reports. That means reports are made available through MIS to the manager so that they can take an important decision. They can take a structured decision, knowledgeable decision and correct decision, practical decision, appropriate decision.
So much of the information is from accounting and transaction systems. It mainly could use हुए ना accounting रे finance रे एवं जो कारोबार हुए transaction तेणु एथरे day to day operation दरकार नहीं एथरे management activity केमिति हबो बा अर्थनैतिक परिचालन हबो बजेट गोटे ऑर्गेनाइजेशन केमिति तयारी हबो एई सब कथाटा मुख्यतः थाए एथरा रेलेवेंट ग्लोबल इकोनॉमी रे मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम टा बेसी प्रयोग होची विश्व अर्थनीति वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बिग ऑर्गेनाइजेशन बिग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस यूनाइटेड नेशंस गवर्नमेंट्स बिग गवर्नमेंट्स whether it is America China or India they use this MIS in their financial okay then people expectations are increased then there are certain activities which are associated with information for making decision, controlling operation and analyzing problems. So what are these? One is input. Input means raw data from the organization or from its external information. There are informations given by other people outside the organization or inside the organization which influences the decision. These are called inputs. Demands, requests, suppose a company wants a product गोटे कंपनी प्रोडक्ट तैयारी करिवो तर गोटे एसी तैयारी करिवो गरम दिन एसी से मार्केट सर्वे कला गोटे डाटा पाइला इनपुट पाइला जे एई भळा एसी रो एई प्रॉब्लम होची हम एई एसी तैयारी करिवा दैट विल बी इफेक्टिव एटा फलप्रद हो मार्केट रे क्लिक करियो भलो कथा ए डाटाटा से इनपुट भाबर देला तापर प्रोसेसिंग करियो डाटा को सेकंड फेज हला प्रोसेसिंग से जो इनपुट डाटा को प्रोसेसिंग कला गोटे मीनिंगफुल फॉर्म रे नबो रॉ डाटा को इनपुट को प्रोसेसिंग कला एतिक लोक चाहउछन्ती ई प्रकार एसी ताकर जो एसी अछि ताकर एही प्रॉब्लम देन आउटपुट so this is from a system theory model in public administration and in political science that inputs are demand request wants of the people they are processed by the government and is transferred into output policies so this is in case of government or public sector in case of private sector in the same process inputs are processed into output so what is input and what is output input हला लोक मानकर दाबी आकांक्षा इच्छा आवश्यकता ये सब को सरकार बुझिला तार आवश्यकता को आखि आगे रखी जो नीति ग्रहण कला दैट इज कॉल्ड आउटपुट एवं इनपुट रो आउटपुट को हबा पई जो प्रक्रिया हला दैट इज कॉल्ड प्रोसेस सो वी गॉट थ्री फैक्टर्स इन एमआईएस वन इज इनपुट अनदर इज प्रोसेसिंग अनदर इज आउटपुट ओके तो वर्तमान एमआईएस रो कोन लक्षण हला चरित्र हला वन इज एमआईएस इज कंप्लीटली कंसर्न्ड विथ मैनेजमेंट परिचालना सहित मुख्यतः एटा संपृक्त means परिचालना कार मैनेजमेंट ऑफ व्हाट मैनेजमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओके तो ऊपर तळ पर्यंत जो कर्मचारी माने अछंती तांकर परिचालना पई इनपुट को व्यवहार करके गोटे पॉलिसी रे सेकंड कोन ना ई जो मैनेजमेंट कोन करे सब बेले एक्टिवली कोन करे रिव्यू करे पार्टिसिपेट करे सिस्टम डेवलपमेंट व्यवस्था को आउरी इंप्रूव करे इफेक्टिव करे So what is the difference between private organization and government organization or public organization? Private organization is concerned with profit. Public organization is concerned with public service, serving the people. So there is a qualitative difference between these two and the application of MIS also differs in both these sectors qualitative. तो यार उद्देश्य होची लोकंकर सेवा करिवो फलप्रद सेवा करिवो सेतरे से इनपुट एको ये करिवो तार मैनेजमेंट केमिति करिवो एम्प्लॉय मानकू बा ह्यूमन रिसोर्स को बा कर्मचारी मानकू सी गोटे मेथड रो करिवो कि पब्लिक सर्विस ये प्राइवेट सर्विस अलग मेथड करिवो येला सेकंड करेक्ट थर्ड हला चरित्र कोन ना इंटीग्रेशन सिस्टम्स एंड एमआईएस आर नॉट सिनोनिमस इंटीग्रेशन कांसेप्ट अलग मिसी जीव एमआईएस ता सेम एमआईएस ता ताटू डिफरेंट ता सहित समान नेक्स्ट हला कोन ना इंटीग्रेटेड नेचर जेहेतु एमआईएस रो अछि तेणु रेलिवेंट डाटाटा गोटे सोर्स रु आने तो रखिबा ताको यूज करिया ये हला कामकार एमआईएस रेलिवेंट डाटा किए जोटा ता पई आवश्यक धर अकाउंट्स मैनेजमेंट रे फाइनेंशियल डाटा इंपोर्टेंट अलग डाटा दरकार नै काई रखियो तो नेसेसरी ओके देन एमआईएस इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन प्लानिंग केयरफुल प्लानिंग ए प्लान हठात एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टा काम कर यू नीड ए प्लान ऑफ एक्शन तो प्लान ऑफ नसले मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम काम करिवो नाही यू नीड ए प्लान एनुअल प्लान और लॉन्गर टर्म प्लान ये हला गोटे एस्पेक्ट तापर फ्लेक्सिबिलिटी दरकार एमआईएस नमनीयता दरकार यू कैन नॉट बी रिजिड इन एमआईएस सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन माने एमआईएस को व्यवहार करछंती से माने रिजिड हेई परिबे नाही
Then what are the components of MIS? A feature, how short feature, they are not very important. It is a formal or informal. What are the components of MIS? Management information system ro upadan gudiko kon. You have 5 components. Okay, these are very important. You can note it down or you can get it from your book also. What are the 5 important components of management information system or MIS? One is hardware. You know hardware. That is the physical equipment used in computers. What a system darkar, desktop darkar, laptop darkar, this is hardware. तार ये दरकार कौन जो जो हार्डवेयर कंपोनेंट काली कोई सॉफ्टवेयर जानी छो that is instructions that control the hardware. Then you need people जो माने प्रोग्रामिंग करिवे चलेबे टाकू एवं इनपुट टाकू आउटपुट परिणत करिवे मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट नै की तेणु एमआईएस को चलेया पे यू नीड ह्यूमन रिसोर्स दैट इज कॉल्ड पीपल. प्रथम है हार्डवेयर, सेकंड है सॉफ्टवेयर, थर्ड इज पीपल. Fourth is procedure. What is the particular procedure in organization to use this system? There must be clear instructions by the organization to the people handling this MIS that you should do like this. तो कर्मचारी मानकु स्पष्ट निर्देश बा गाइडलाइन रहबा उचित जे से माने केमिति हैंडल करिवे डाटा उडा MIS सिस्टम. Then you need to database, have database. Database अर्थ संपृक्त तथ्य गुड़िक सुरक्षित भाव में रखा जीव सिस्टमेटाइज करी तमे गोटे माउस क्लिक रे हठात तुम पाइजो सर्च करी तुम पाइजो तब सिस्टमेटाइज कर रखा जो को डाटा कोड रहबो अलग अलग फाइल हबो अलग अलग सेक्टर हबो बुझो. सो दीज आर दी 5 important components of MIS, management information system. Again I am repeating for your benefit. One is hardware, second is software, third is people, fourth is procedure, fifth is database. Then we'll go to why I am explaining the MIS. MIS is very important. What are the challenges? The biggest challenge is how you can use ICT or information communication technology to design organization to introduce new products or improve service delivery. These are two bigger challenges. What a new product what organization theory karibo ja example dali SC example but service delivery out के better केमती करि परिबो. तर पोस्ट परचेज सर्विस गोटे कुआ जाए किणी सारा पर गोटे प्रोडक्ट रो सर्विस तर गोटे एसी जने किणला आमे मार्केट रे तार बदनाम अछि एटा भलो एसी किन तार सर्विस नाही तार तो खराब होला बेलू से लोक आसुनांती 8 दिन पळौची गरम रे तमे सिज जाउथबो ताकू यदि इंप्रूव करिवो एटा केमिति आईसीटी यूज करिवो एटा बड़ चैलेंज. हाउ आईसीटी कैन बी यूज? सपोज यू हैव ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तमे सेठी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कलो जे मोर एसी वर्तमान मु किनिथिली मासे हिची खराब अछि आई नीड ए सर्विस तो यू गेट ए टिकेट तमर गोटे सीरियल नंबर आसीयो एवं इमीडिएट सर्विस आसला यू गेट ए मेसेज इन व्हाट्सएप इन ईमेल और इन योर फोन और गेट ए कॉल फ्रॉम द कंपनी. आजिकल सब कंपनी से डीटीएच हो एयरलाइंस हो एवरीवेयर यू फाइंड ए customer service. You have bought a phone, you have a complaint, you can call in a customer service of that company, then you get registered in the data. That's the database. So what are the complaints in the database? How many complaints have been addressed? केतरा complaint customer तरफ आछि केते complaint को हमें समाधान करिछु ये इटा डिपेंड करू क्वालिटी ऊपर इटा एमआईएस डाटा रे एटा करि पारे गोटे कंपनी आजिकल करू both in public sector and in private sector. Then how to understand the system? Then BSNL होउची आपण माने संतुष्ट हेले कि नहीं सेवा रे 5 मार्क 6 मार्क देबे. This is called MIS system. How to understand the system requirements in a global economic environment? विश्वर जो जगतीकरण प्रक्रिया जो अर्थनैतिक युग बा परिवेश there is huge competition. सेथरे तमे कस्टमर सर्विस ये नकले तम कंपटीशन ने you will be very outdated, you will be ousted from the market. पूरा market to product पळेबो तो survive करि परिबो. Most important is customer satisfaction. Here we need important MIS and that is one of the biggest challenges of MIS. How you can use your service or product by using MIS. Then how to develop the architecture of MIS that helps in achieving goals. MIS जो डिजाइन आर्किटेक्चर घर आर्किटेक्चर तैयारी करा जाए डिजाइन तैयारी करा जाए
से मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम रो डिजाइन टा एमती ऑर्गेनाइजेशन करिया उचित जहाँद्वारा तां लक्ष्य स्थल से पहुँचे एवं से कंप्यूटर हार्डवेयर रे ताकू स्टोर करेंगे सॉफ्टवेयर टाकू से भाया डेवलप करेंगे देन दे कैन बी सक्सेसफुल देन न्यू एमआईएस रे किमी तुम इन्वेस्टमेंट सिक्योर करिवो माने बेसी पैसा खर्च करिवो डेवलप करिया पे then how to ensure that MIS are used in ethical and socially responsible manner eta nitigato bhabare kemiti habo dharo you got data from customers you cannot sell the data you cannot manipulate the data you cannot manipulate the data given by the customers tanga na ga thikana boyaso esu paile jo data taku misuse kariba uchit na eta ethical use of MIS so these are the challenges of MIS that we discussed. So this chapter is over. I hope you have understood that. They are the important concept, the role of ICT. This is called role of ICT. Then we will go to the next chapter, that is ICT and administration. ICT role of ICT in administration. Prasasana re ICT ro bhumika. So you know that from the 90s. With the coming of globalization and LPG, you know LPG, liberalization, globalization and privatization. So what is the biggest challenge for them? That is economic reforms. They have to reform themselves or they will perish. They have to compete in the global market. There will be privatization, there will be no public sector protection by the government, etc., etc. So in this background, you find the role of ICT increasing. So what is the role of ICT? There are three important areas for the implementation of or application of or use of ICT. One is international administration, then you have planning and decision making, then service delivery. तीनिटा गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र रे ICT रा यूज होला. Okay. First, internal administration. Suppose गोटे example लिया जाओ ओडिशा secretariat administration. Secretariat रे we have many departments, more than 30 departments. Education department अच्छी, home department अच्छी, transport department अच्छी, finance department अच्छी, health department अच्छी, urban department अच्छी, planning department अच्छी, coordination department अच्छी, GA department अच्छी, forest department अच्छी, पंचायत राज डिपार्टमेंट अच्छी, विभिन्न सरकारଙ୍କର विभिन्न विभाग अच्छी परिचालना करिया. तेणु सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन सपोज यार हेड हेले किए चीफ सेक्रेटरी तांको असिस्ट कले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तांको तळगु रहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी तांको तळगु रहले कमिशनर कम सेक्रेटरी तांको तळगु रहले स्पेशल सेक्रेटरी तांको तळगु रहले एडिशनल सेक्रेटरी. सो दिस इज द हायरार्की ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन ओडिशा सेक्रेटरीएट और एनी सेक्रेटरीएट ऑफ द स्टेट. आम राज्य जेते देश जेते राज्य अच्छी सबू राज्य मानकरे गोटे सेक्रेटरीएट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी जार स्ट्रक्चरटा मु तुमको कहि एथरे आईसीटी केमिति यूज हबो. गोटे एग्जांपल लिया जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन तार तो लैंड रे लोकल एरिया नेटवर्क रे सबू डिपार्टमेंट कनेक्टेड. सपोज चीफ सेक्रेटरी गिव्स ए ऑर्डर इंस्ट्रक्शन और सजेशन. चीफ सेक्रेटरी गोटे ऑर्डर देले इंस्ट्रक्शन देले डिफरेंट डिपार्टमेंट बाहर को नुहे माने तांकर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन से जो लैन नेटवर्क से कनेक्टेड होइछन संगे संग ऑर्डरटा पहुंचे इमीडिएटली एटा कार्य कर. दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन. तेणु भीतर जो प्रशासन सेटा मोटे एग्जांपल देल तार केमिति इनफॉरमेशन माने कार्यकारी होछि. तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप करागला, डाटाबेस डेवलप करागला, वर्ड प्रोसेसिंग करागला, स्प्रेडशीट करागला, तो डाटा प्रोसेस्ड हो गला, ग्रुप वायर माने ग्रुपटा कनेक्टेड हो गला, तो कंप्यूटर से कनेक्टेड हो गला, इंटरनल कंप्यूटर सब माने शेयर हो गला, एंटायर डिपार्टमेंट रे इंटर कनेक्टेड आउ के जाई परिबे नै. तार हार्डवेयर हो गला, मिडलवेयर हो गला, टॉप वेयर हो गला, सेउडा सब इंटीग्रेटेड हो गला. वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क तार कनेक्टिविटी रख देला जोटा नेट रो प्लेटफॉर्म हो गला. सिक्यूरिटी पॉलिसी है, सिक्यूरिटी हैक हम नहीं, गवर्नमेंट डाटा ब्लीच किमत हम नहीं, पशि पारे बाहर लोक ता भितर ताकू प्रोटेक्शन करा. ओके, यहाँ गवर्नमेंट प्योरली करें पीपीटी मोड रे करें, प्राइवेट पब्लिक एटा से देदेला धर गोटे पूरा लीज देदेला गोटे प्राइवेट कंपनी की से कर धर देदेला टेलीकॉम टाटा सर्विसेस टीस की देदेला टाटा सर्विसेस को देदेला जेकोसी एनी कंपनी देदेला से माने एकता मेंटेन करेंगे. यहाँ हला रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रोल ऑफ आईसीटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन. आम जो एग्जांपल फास्ट नले कौन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन इधर कौन एडवांटेज है ना इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन आम टाइम टा रिड्यूस कर
चीफ सेक्रेटरी चिठीटा पिओन आनिक देला बेलू डिपार्टमेंट रे गोटे दिन लगी जाऊला सब डिपार्टमेंट बुलिकी 2-3 दिन केवल पिओन चिठी देवार जब इमरजेंसी अच्छी चीफ सेक्रेटरी फोन करके इंडिविजुअल प्राइवेट सेक्रेटरी कहते बर्तमान किसी कर दरकार यू हैव ए डाटाबेस यू हैव ए लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क यू हैव ए सिस्टम interconnected system then within a click of the mouse or within seconds entire communication is spread to all the concerned departments concerned officers concerned sections समग्र सेक्रेटरीट रे भुवनेश्वर जो सेक्रेटरीट अच्छी गोटाए सेकेंड रे सबु निर्देशनामा मुख्यमंत्री दफ्तर हो बा मंत्री दफ्तर हो बा चीफ सेक्रेटरी दफ्तर हो पहुंच गला डाटा दरकार डाटा पहुंच गला सो क्विक एडमिनिस्ट्रेशन यार गोटे सब बड़ लाभ है क्विक एडमिनिस्ट्रेशन लोएस्ट लेवल रु ऊपर पर्यंत ऊपर तल पर्यंत है तो ऑनलाइन फाइल मूवमेंट सेकंड है यार कौन ऑनलाइन फाइल तले गोटे फाइल मूव है गोटे लोकर ग्रीवांस अच्छी इंडिविजुअल फाइल कलेक्टिव फाइल मूव है फाइल मूव होगा गोटे इनफॉरमेशन ऊपर को पड़ेगा तो अननेसेसरी डिले आउ हो पार है एवं ये जो फाइल मूवमेंट है सेंट्रली स्टोर हो गला केंद्रीय भाव में रखा होगा आउ फाइल से कागज पत्र आलपिन मराई फितार बंधा हो नाली फितार बड़ फाइल तो पिओन धरिक जाऊ आलमिरा रोच सेमती ना कंप्यूटर डेस्कटॉप रे रहीगला फाइलटा एनीबडी कैन एक्सेस जार लिंक अच्छी पासवर्ड अच्छी चीफ सेक्रेटरी पाखु तल पर्यंत समस्ते देखिपारे फाइल कौन अच्छी फाइल कौन रहा दरकार कहीं डिले है ये हूँ सेकेंड इम्पोर्टाट aspect of internal administration that is storage of file and data थर्ड कौन है ना एफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम डिपार्टमेंट रो एम्प्लॉय मानक भितर बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल काली जोटा कहती एथरे टाइम वेस्ट हेनी पेपर वेस्ट हेनी कम्युनिकेशन सिस्टम टा एफिशिएंटली क्विकली हो जोगाजोग व्यवस्था तांको भितर जोटा मु कहली फोर्थ है कौन ना जो मैनुअल सिस्टम थिला कागज पत्र नोट सीट डॉक्यूमेंट लीव एप्लिकेशन ट्रांसफर और जीपीएफ ये सब बर्तमान ऑनलाइन हो गला जन जीपीएफ अप्लाई कर ऑनलाइन अप्लाई कर अप्लाई कर दरकार ऑटोमेटिक से तार रिटायरमेंट परदिन आसी पहुंच जाए जीपीएफ सो फास्ट नोट सीट कर कागज कर एप्लिकेशन गदा गदा दिस्ता दिस्ता लक्ष लक्ष गछ कटा है चलुची दीज आर दी सीरियस इश्यूज दैट हैज बीन एड्रेस्ड बाय दिस यूज ऑफ आईसीटी इन इंटरनेशनल आम इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन टा पढ़ुचे आम एक्सटर्नल को जाए नेक्स्ट पॉइंट है एटा केते नंबर कहली फोर्थ कहली ना थर्ड कहली फोर्थ कहले सर फोर्थ कहली ना so this is fifth fifth it conditions are save the environment in which the department is operating that the department गुडा जो काम करूजंती it conditions creates the ambience environment परिवेश टा सृष्टि करे जो डिपार्टमेंट गुडा acquainted है एडजस्टेड है एवं ताका नॉलेज और स्किल टा बढ़ाए जो प्रशासनिक अधिकारी माने अछंती बा किराणी माने अछंती स्टाफ अछंती ये acquainted है गले ताका नॉलेज टा है गला स्किल टा दक्षता बढ़ी होतरे हला एवं जोटा गोटे इंस्टीट्यूशनल लर्निंग और ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग से शिक्षाटा पाइबे सेटे नुआ परिवेश सहित से माने एडजस्ट है सो दिस इज ए कंप्लीट चेंज इन द पैराडाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और शिफ्ट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव पैराडाइम माने कोन मॉडल जो मॉडल शासन होउतला बर्तमान से मॉडल आउ नाही आईसीटी रे यूज करे आगु होउतला जण एप्लिकेशन एक दबो तक से मार्क करिवे तापर नोट शीट लिखिबे टाइम दरकार से कुआडे हजिबो फाइल मिलिबो नाही ये व्यवस्था ना विथ द क्लिक ऑफ द माउस थरे कंप्यूटर रे माउस क्लिक कला माने फाइल क्रिएट हेला माने ऑनलाइन चलला तार नॉन स्टॉप चलला जोट अछि जे चाहेबो ये करियो सो आफ्टर दिस एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन नाउ लेट अस हैव ए कंपैरिजन आमे वर्तमान तुलना करिया कोन इथरे सुविधा यार कोन थिला ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन ने बा क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बा ओल्ड एडमिनिस्ट्रेशन ने बा नॉन आईसीटी एडमिनिस्ट्रेशन ने अण प्रजुक्ति विद्या सूचना प्रजुक्ति विद्या प्रशासन ने कौन थिला बर्तमान ई गवर्नेंस रे बा ई एडमिनिस्ट्रेशन रे बा ई फाइल कौन हुआ कथा फर्स्ट हला देयर वाज ह्यूज पेपर यूज इन ओल्डर एडमिनिस्ट्रेशन पुराना प्रशासन रे प्रबल पेपर व्यवहार होतला पेपर फाइल व्यवहार होतला बर्तमान किछि फाइल कागज रो कोड नै सब कंप्यूटर बेस्ड फाइल हे गला ओके हार्ड कॉपी अच्छे ना से कथा नुहे कारण कंप्यूटर सिस्टम हैक हो मिल नहीं इंपोर्टेंट डिसीजन ना पड़ो तार गोटे अल्टरनेटिव व्यवस्था है
सो बर्तमान तमे मधे यूज कर देखुछ व्हाट एवर आई सी माय स्टूडेंट्स पिला माने सब कोन करछंती जोठी जन फोटो उठे दो एप्लिकेशन टा पके देले तार फोटोटा उठे दे सो देयर इज लेस चांस ऑफ फॉरगेटिंग ये गोटे चेंजेस है भूलबार चांस है मोबाइल रे तुम देखल स्टोरेज कर दे डाटा फोटो देखले एत तारिख दिन अप्लाई करथली एतिक पैसा देथली एत में अप्लाई करथना भूलबार तुम चांस अनलेस योर मोबाइल इज हैक्ड और कंप्यूटर इज हैक्ड और इट इज करप्ट पेन ड्राइव करप्ट है तेणु बर्तमान वी हैव कंप्यूटर बेस्ड फाइल ऑनलाइन फाइल अर्लियर वी हैड पेपर फाइल है दिस इज द मेजर डिफरेंस पुराना आगे कागज फाइल थिला बर्तमान ई फाइल अछि नंबर 1 नंबर 2 द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन वाज हायरार्किकल ऊपर तळु प्रशासन थिला हायरार्की गोटे बड़ कॉन्सेप्ट बॉडी एडमिनिस्ट्रेशन अछि ऊपर निर्देश आसीओ तळ जहा निर्देश आसीओ से करिवे आ निजु किछि करिवे नाही बर्तमान सेटा अछि नाही से कथा नुहे किंतु बर्तमान नेटवर्क देगला समस्ते इंटर कनेक्टेड है गोटे सजेशन टा बाईपासिंग हायरार्की मध्य जाई परिबो डिस्कशन हे परिबो बा हायर अथॉरिटी डायरेक्ट बाईपासिंग सेक्रेटरी कैन आस्क फॉर इंफॉर्मेशन और डाटा और ए सजेशन तळु को डायरेक्ट मगा जाई परिबो सर चीफ मिनिस्टर ऑफिस मंत्री ऑफिस देके आसिया कथा से डायरेक्ट मते माग दे परिबो डिपार्टमेंट को ए डाटा तुम दियो बा व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस इमरजेंसी अछि तो इट इज कॉल्ड नेटवर्किंग हमर हेगला तापरे थर्ड हला जे आगुरु देयर इज द हाइडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्रेटिव प्रशासन टा बहुत लुचिला थला माने सिक्रेट रखथला इंफॉर्मेशन तमे जे मागियो आगे हम फाइल टा कोडी अछि नियुक्ति केबे हबो बदली के भवसन लुचोतरे केही तुम इंफॉर्मेशन दोनोतरे कोदराडा ऑफिशियल सिक्रेट गवर्नमेंट सिक्रेट हम कहि परिबनु तेणु मनीष बा नागरिक माने बा जो ने पाउछन सेवा सने अंधकार थिले एथि प्रशासन क्षमता बहुत थिला तांको पाकर सूचना थिला बोली क्षमता बहुत थिला बर्तमान जो इनफॉरमेशन टा शेयर हे गला वेबसाइट रे बा डाटा इनफॉरमेशन अवेलेबल आ को 50 का सब डाटा तुम सेठी पाइजो एक्सेप्ट सम सीक्रेट डाटा नेक्स्ट हला एक्सपेंडिचर ओरिएंटेशन आगुरु केते पैसा खर्च हो सेटा देखा होतला बर्तमान एटा परफॉर्मेंस बेस्ड हे गला केते फलप्रद काम होउछ केते लोक सैटिस्फाइड केते दक्षतार सहित हेछि केते स्वच्छतार सहित हेछि केते शीघ्र हेछि दैट मीन्स पैरामीटर्स ऑफ परफॉर्मेंस are central in today's administration which were not there in earlier माने काम करिवार जो दक्षता भित्तिक प्रशासन से हला खर्च बा व्यय भित्तिक प्रशासन नेक्स्ट हला अर्लियर इट वाज इंडिविजुअलिस्टिक व्यक्तिगत थिला माने अफसर माने जा कहबे से डिसीजन नेबे व्यक्ति केंद्रित थिला बर्तमान एटा ऑर्गेनाइजेशन माने अनुष्ठान केंद्रित हे गेला आगुर थिला बैच वाइज प्रोसेसिंग होता बर्तमान ऑनलाइन प्रोसेसिंग हे गेला आगुरु एक्सेस ता माने जो हमर प्रवेश थिला साधारण नागरिक मानकर डिलेड थिला माने देरी होतरा अननेसेसरी डिले जाको हमें काली कहउथले रेड टॉपिक जो नाली पिता बस शो बर्तमान इंस्टेंट एक्सेस हे गेला आगुरु हमर प्रवेश नथिला सूचना नथिला जानि पर नथिला बर्तमान इंस्टेंट एक्सेस हे गेला देन आगुरु थिला रेस्पॉन्स वाज नॉट अवेलेबल तमोड अप्लाई करो रेस्पॉन्स किछ नाही पास्तर दूर थोड़ा रेस्पॉन्स नाही बट डिलेड रेस्पॉन्स थिला बर्तमान से कथा नाही प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स है बिकॉज़ टाइम फ्रेम इज वेरी क्लियर तमर हायर अथॉरिटी पचारिबो जे एदिन हला एप्लीकेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लाइन तो रेस्पॉन्ड काई जे करिवा कथा से काहे तार उत्तर देने तेणु से उत्तर दायी अकाउंटेबल तेणु ये जो प्रेशर यू गेट अ प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटीज is the difference. So you have a delayed response, now you have a quick response. आगुरु डाटा टा कोन मैनुअली होतला खाता कलम रे लिखुतले एतिकी पिला एडमिशन ला खाता ई सब बर्तन के ऑनलाइन एंट्री हे गेला फटाफट एंट्री जो डाटा तब ई डाटा एंट्री हमें को डाटा एंट्री ऑपरेटर माने बहुत हे गेलन डीओ तन तांकर काम हला डाटा टा एंट्री करिया तर आगुरु जो रिजल्ट बाहरतला मार्क टा एंट्री होतला हाथ लेखा होता जड़े रोल नंबर या सब्जेक्ट तार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बा आर्ट्स रे पॉलिटिक्स हिस्ट्री इकोनॉमिक केती मार्क्स रखे एते भूल होवार चांस अछि बर्तमान एथरे टाइपिंग रे भूल होबो नै से कथा न रीचेक करी हो बर्तमान ऑनलाइन डाटा एंट्री हेला पर एटा आउरी क्विक हेला सहज रे शीघ्र रिजल्ट बाहर सुविधा मोर एग्जांपल देलेटा सेथरे गोटे रूटीन वर्क टा कंटिन्यूअस होतरा नोट शीट लिखिबो ए करिवो कागज लिखिबो
ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିପିଟେଟିଭ ମାନେ ଯୋଉଟା ବିରକ୍ତିକର ଟିଡିୟସ୍ ଅନପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ଟାୟାରସମ୍ ଜବ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିଏଟିଭ ୱାର୍କ ଟାଇମ୍ ଲୋକ ଟାଇମ୍ ପାଇଲା କୁଇକ୍ ଯେହେତୁ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଆଇଟି ଯୋଉମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁନଥିଲେ ଜାଣୁନଥିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେମାନେ ଡରୁଥିଲେ ଅଫିସର ମାନେ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଏଇ କିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୁଁ ଜାଣିନି ୟୁଜ୍ କରିବିନି ଆଜି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା କମ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେଣି। ଏଭ୍ରି ଅଫିସର ଅର୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ is very much trained to use ICT in administration ଯିଏ ବି ଆସୁଛି ସେ ଆଇଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଟି ସାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତମେ କେତେ ଆଇଟି ସାବି କେତେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାବି କେତେ ତମ ନଲେଜ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଇନ୍ ଜବ୍ ସିଲେକ୍ସନ। ଚାକିରି ନିଯୁକ୍ତିରେ ସିଲେକ୍ସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ତମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେଇଟା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଠି ପୁରୁଣାଟାରେ କଣ ଥିଲା ନା ଷ୍ଟାଟସ୍ କୋ ମେଣ୍ଟେନ ହଉଥିଲା ସ୍ଥିରାବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା ସେୟା ଗତାନୁଗତିକ ଧରାରେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ତମେ ଚାଲୁଥିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଦେयर ଇଜ ଆନ୍ ସ୍କୋପ ଫର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହବ ବା ହେଇପାରିବ। ଓକେ ତ ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫର ଇଫେକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଡିଫରେନ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯୋଉ ଆଇସିଟି ୟୁଜରେ କଣ ଦରକାର ଖାଲି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ଗୁଡା କହିଦଉଛି। କାଲି ତ ଆମେ ଡିଟେଲ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସ୍ପେସିଫିକ ଏଥିରେ ଅଛି ସେଟା ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଜାଣିଛ। ଆଇ ନିଡ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଗୋଟେ ହେଲା ୱାୟାରଲେସ୍ ଡିଭାଇସ୍ ତମେ ଜାଣିଛ ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିଫାଏଡ ମେସେଜିଂ ଯୋଉଟା ୟୁଏମ୍ ଅଛି ୟୁନିଫାଏଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉଟା ଇମେଲ ତମେ ଜାଣିଛ फाइल ट्रैकिंग मॉड्यूल गोटे अच्छी सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेशन कोड फाइलटा अच्छी तब ट्रैक कर पारे दैट इज ए सॉफ्टवेयर कौन स्टेप ने आइछि। ओके सो दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ई एडमिनिस्ट्रेशन इन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन और ई गवर्नेंस इन इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। देन सेकंड है कौन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग तुम प्लान करिवो डिसीजन मेक करिवो एटा ऑलरेडी पढ़े इनफॉरमेशन सिस्टम एमआईएस मैनेजमेंट सिस्टम जीआईएस ताको रिपीट करिया हमर दरकार नहीं। ओके MIS कहली এটা খালি রিপিট হয়েছে এতে। সো ইউ এন্টায়ারলি নিড টু কম্প্यूटराइज द सिस्टम কিন্তু ওড়িশারে বেঙ্গলরে বা কর্ণাটকরে আন্ধ্রপ্রদেশরে এই সব এন্টায়ার সিস্টমটা কোন হয়েছে কম্প্यूटराइज হয়েছে। আম ওড়িশারে যেমন ট্রান্সপোর্ট সিস্টম বর্তমান তুমি দেখিব ন্যাশনাল হাইওয়ে এটা কেতে সুবিধা হয়ে গেল ন্যাশনাল হাইওয়ে ক্যামেরা লাগিছে। সো হ্যাভ ইউ সিন there are cameras in national highway national camera lagi तुम देख ना नहीं देखि न ଦେଖିଛୁ ସାର୍। ଏଟା कोन ପାଇଁ ଲାଗି ଫଟୋ ଉଠିବ ଆମର ନା कोन ନା ସାର୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ କି ସ୍ପିଡ କାର ସ୍ପିଡ ଲିମିଟ if you ଆଉ cross the speed then track କରିବେ ନାହିଁ ତମ ଘରକୁ ସେ ଫୋନ ନମ୍ବର ରେ ଚାଲାଣ ଆସିବ ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ଫାଇନ ହେଲା। so that is called computerized system ଏଟା ଗୋଟେ computerized ହେଇଗଲା ସେଟା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କରିଛି ଓଡିଶା କରିଛି ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ କରିଦେଲେ। ସେଭଳିଆ କାଲକାଟାର ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡା ସବୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ ଇଣ୍ଟରନାଲ କମ୍ୟୁନିକେଟର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଟା ସବୁ ଅନଲାଇନ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଅନଲାଇନ ନ କଲେ ତମେ ମାନୁଆଲି କରିପାରିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କମ୍ପଲସରି। ସେଭଳିଆ ସୋ ମେନି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଅଛି ଯେମିତି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଭାଉଚର ଜେନେରେସନ ହଉଛି ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିପି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯିବ ସେ ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ ତମେ ଗୋଟେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ମାରିଲା ଭଳିଆ ମେସିନରେ ମାରିଦବ ଗୋଟେ ଟିକେଟଟା ପାଇବ ତମ ନମ୍ବରଟା ଡିସପ୍ଲେ ହବ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ତମ ନମ୍ବର ସାର୍ ଆଉ ଲମ୍ବା ଲାଇନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ୟୁ ସିଟ୍ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲି। ତ ଦେଖ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଇସିଟି ଟା କେତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହଉଛି ମାନେ ଆଗରୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ହଉଥିଲା ଲୋକମାନେ ସେଠି ମାନେ ଦାଦାଗିରି କରୁଥିଲେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଁ ଏମଏଲଏଙ୍କର ମୁଁ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ ମତେ ଆଗେ ଲାଇନ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଦିସ୍ ହାଜ ବିନ୍ ଟୋଟାଲି ମେଡ୍ ରିଡଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଏଇଟା ପୁରା ବେକାର ହେଇଗଲା ଏଇ ସିଷ୍ଟମ କେମିତି ନା ୟୁ ସିମ୍ପଲି ଗो ରେଜିଷ୍ଟର ଏ ନେମ୍ ନହେଲେ ତମ ନମ୍ବର ନ ଆଇଲେ ତମେ ଯେତେ ଚିଲେଇଲେ କାଉଣ୍ଟରରେ କେହି ଶୁଣିବେନି ଯେତେ ପାୱାରଫୁଲ नो बडी विल लिसन। ତେଣୁ ତମେ ମାରିଦେଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେ ଯୋଉ ଟିଭିରେ ଡିସପ୍ଲେ ହେଇଗଲା 39 ନମ୍ବର ଆସିଗଲା ୟୁର ନମ୍ବର ଇଜ 39 ଗୋଟେ ଟିକେଟ ପାଇଛ ତମେ ଗଲ ତମର ଯାହା କାମ କରିବା କଥା କର। ଓକେ ଦେନ୍ ୟୁ ନିଡ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି LAN 1 ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିଛ ତମେ। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଟେଲିକନଫରେନ୍ସିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଟେଲିକନଫରେନ୍ସିଂ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଟିଂ ନେବେ ଜୁମ୍ରେ ବା ଗୁଗୁଲରେ ଆମେ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ସେଟା ନେଇକି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଲେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଇଏ କଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ସର୍ଭିସ ଡେଲିଭରି କଣ ଯେତେ ସେବା ଅଛି ତମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ ହଉ ତମର ଆବାସ ହଉ ବା ତମର ଯୋଉ ଯାହା ଯାହା ବେସିକ ସେବା ଆମେ ଲୋକମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଯେମିତି ତମର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ସେଠି ପୁରେଇ ଦେଲ ତମର ଯେତେ ପଇସା ଅଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ହେଲା ତ
तेणु पुलिस सर्विसेस हो, एफआईआर रजिस्ट्रेशन हो, पब्लिक इनफॉरमेशन हो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कथा हो, बा एग्रीकल्चर इनफॉरमेशन हो, कृषि वैज्ञानिक संपर्कित इनफॉरमेशन, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन हला। तापरे तमे पानी बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिक बिल जहाँ जहाँ दबार अच्छी सांग सांग तमे ऑनलाइन पेमेंट कर दला आवश्यक दरकार नहीं ऑफिस की। सो जो ह्यूज भिड़ होउथला, टाइम जाउथला, लोक माने हैरान होउथले, सेटा चेंज है। तार गोटे एडवांस सिस्टम हम पळेले कोड सिंगल विंडो सिस्टम। तार तो तमे तळे जाउथरो एठी गोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री करे जण छोटिया भुवनेश्वर गोटे शिल्प खोले। व्हाट चैलेंजेस ही हैज टू फेस, कौन से चैलेंजेस फेस करथला ना से फास्ट जीवो वेयर ही विल गेट द लैंड, जगह कोड पाए से इपिकल जीवो लैंड डिपार्टमेंट को जीवो से कहबे नाही तमे आगे एते क्लियरेंस आनो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को क्लियरेंस आने को जीवो, एनवायरनमेंट क्लियरेंस आने जीवो, पानी क्लियरेंस आने को जीवो। सो ही हैज टू गो टू अटेंड मेनी विंडोज एंड दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। बर्तमान सिंगल विंडो सिस्टम हो गला माने सब कथा गोटे जगह सरकार कर सेठी सिंगल विंडो क्लियरेंस हो गला। तुम जब क्लियरेंस अच्छी तुम स्टार्ट कर क्लियरेंस ना तुम क्लियरेंस करके स्टार्ट कर और जीव। तो दिस इज कॉल्ड सिंगल विंडो सिस्टम, दैट इज वन स्टेप सेंटर फॉर योर सर्विसेज। गोटे केन्द्र जो तुम सर्विस पाइब। कालकाटा एग्जांपल अच्छी, दिल्ली अच्छी, हैदराबाद अच्छी, मुंबई अच्छी, भुवनेश्वर अच्छी, सो मेनी एग्जांपल्स यू कैन गो थ्रू गूगल सर्च और इन योर बुक। ओके, सो आईसीटी एप्लिकेशन होची जो सर्विस डिलीवरी रे एतरे पब्लिक इंटरेक्शन होची, क्विक डिलीवरी होची, क्वालिटी डिलीवरी होची, टाइम मैनेजमेंट होची, मनी मैनेजमेंट होची, कम पैसा होची इत्यादि। हम ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड so many things regarding this, like what this advantages of e-governance, internal administration। तो इथरे की कांसेप्ट जोटा कोन हला इथरनेट जोटा लैन ने लागे, टेलीमेट्री तार एप्लीकेशन कोन, तेणु क्वेश्चन जोटा तुम पाइबो यू विल गेट फ्रॉम द books, you can go through the books what I taught today so that your doubts will be more clear। Okay, you will have a complete command on this subject। So unit 5 we have 4 classes, we have to finish around 12 or 14 units। total unit केते अछि मोर मन नै, तो हमरो 4टा ना 5टा क्लास अछि, आज अछि, काली अछि, 6 अछि। we have to finish that। unit 5 हला जे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कोन, ये जो आईसीटी रिफॉर्म हला इतरे मु काली कहितली जे एंटायरली द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज चेंज। सो बर्तन कुआ जाउची कोन ना गवर्नमेंट वर्कर हैज टू बी ए नॉलेज वर्कर। सरकारी कर्मचारी जणे तार ज्ञानी वर्कर से हम ना हे परिबन, तार आईसीटी रे नॉलेज नथले से काम करि परिबो नाही, एवं आईसीटी रो डाटाबेस रे नॉलेज थले काम करि परिबो नै, ज्ञान नथले काम करि परिबो। दिस इज ए न्यू कल्चर इन ऑर्गेनाइजेशन। संगठन गोटे नुआ संस्कृति आसीगला, तमे खाली दी दाड़ लिखि दे नोट्स लिखि देला हो, तुम पूरा करियो पड़ो। 3-4टा कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट ही हैज टू बी स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स स्मार्ट इन यूज ऑफ आईसीटी। आईसीटी व्यवहार करिवारे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी व्यवहार करिवारे से कर्मचारी जनक स्मार्ट हवा दरकार। से कंप्यूटर व्यवहार हो, वेबसाइट व्यवहार हो बा इत्यादि। सेकेंड हला क्विकली तो रेस्पॉन्ड करिवा दरकार टाइम फ्रेम भितर, ये गोटे नुआ कल्चर। थर्ड हला और जो हाकिमाती देखौतले अमलातांत्रिक व्यवस्था रे लोक मानु घृणा करिवा, पाख पुरे देना दबा, इन्फॉर्मेशन दा से जुग चली गला। तेणु से कल्चर आउ नाही। तेणु वर्तमान ऑर्गेनाइजेशन कोन आसीगला को प्रोजेक्ट रे ना गोटे हाई लेवल मैनेजमेंट सपोर्ट आसीगला। पायलट प्रोजेक्ट नहीं गले बा ताकू आईसीटी सहित कनेक्ट कर देले। तेणु एथरे जो माने काम रे संपृक्त से माने इंटरेस्टेड होगा दरकार, एवं आईसीटी रो यूज होगा दरकार, टाइमली यूज होगा दरकार, एवं गाइड करिया दरकार, अन्य मानक पय रोल मॉडल होगा दरकार, पॉजिटिव अप्रोच रहबा दरकार, न्यू टेक्नोलॉजी टाको आस्ते आस्ते इंप्रूव करिया दरकार। तेणु से टेक्नोलॉजी प्रयोग करेंगे, गोटे टेक्नोलॉजी तो रही बर्तमान नुआ टेक्नोलॉजी धर I was talking that AI, artificial intelligence। Artificial intelligence, I have already explained you how we are using now. This is a bigger challenge for administration। आउरी artificial intelligence है ना administration पे आउरी नुआ कल्चर आसी। तेणु आमर जो प्रशासनिक संस्कृति थिला आगुरु कौन थिला ना अमलातांत्रिक व्यवस्था सिक्रेटिव थिला, गुप्त थिला, काहाकू छाड़ू नथिला, लोकंकु सूचना दो नथिला।
व्यय सापेक्ष थिला समय सापेक्ष थिला नेगेटिव थिला फाइल नोटशीट हम नेगेटिव हम सूचना प्रदान करी नथिला फ्रेंडली नथिला ये सब अभियोग होता जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिशन सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिशन आंथोनी कमिटी गुड़ाए कमिटी केमी प्रशासनिक संस्कार हवा कह हठात जो आईसीटी आसीगला ई गवर्नेंस आसीगला एंटायरली द कल्चर इज चेंज एंटायर द न्यू पैराडाइम केम नुआ गोटे मॉडल आसिया जो थे तुमको स्मार्ट होगा पड़ो स्मार्ट अर्थ मुझे काली तुमको कही सिंपल मोराल रेस्पॉन्सिव स्मार्ट माने मुझे कहूनी पेंट सार्ट पिंधिक स्मार्ट हम यहाँ कहगला न्यू गवर्नेंस कल्चर ए कौन करा ना इंट्रोड्यूस ई गवर्नेंस इंट्रोड्यूस हम स्पेसिफिक डिपार्टमेंट रे आईसीटी एप्लिकेशन कौन अपॉर्चुनिटी अच्छी देखा डिजाइन आईसीटी एप्लिकेशन टाको सॉफ्टवेयर डिजाइन करा एवं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम ई गवर्नेंस कले केते पैसा खर्च हम से पैसा उठुची कि नहीं फलप्रद होची कि नहीं दैट इज कॉल्ड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जेमिति one farmer is doing agriculture in his field whether it is cost benefit that means what is the loss and what is the gain what is the profit what is the gain गोटे चाष कला धान अमल कला जी खर्च करता पाइला कि नहीं ताठू कम पाइला कि बेसी पाइला दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सेंसिटाइज करिवो एवं जो पेपर रिपोर्ट डिसेमिनेट करिवो वेबसाइट तार डाटा सब रखिवो so these are new cultures that we are seeing and throughout the world it is not in India or Odisha throughout the world we see the growing use of acid एवं another negative जिनस कौन that is called digital divide जो माने साधारण लोक गरीब लोक ग्रामांचल रोचंती निपट मफसल रोचंती तांकर आईसीटी व्यवहार जानना आईसीटी टूल नहीं तांका बारे कंप्यूटर नहीं बा जनसेवा केंद्र से आसिक पहुंच की सेवा पाई पाउना दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज और नेगेटिव कल्चर इन ई गवर्नेंस ताकू किमे ओवरकम कले पॉजिटिव कल्चर टा फलप्रद हे परियो बा लोक माने पाई परि दैट इज मोस्ट ओके so ICT has compelled for a change it has changed the method of communication जोटा formality थिला बर्तन informal हे गला it has changed the personality of the administration it has come to centralize unknown then these are the challenges new practices in administrative culture okay then there are some suggestions what to do not to do we will not go to that so earlier there was a resistance to change एटा को विरोध होतला बहुत एम्प्लॉय माने विरोध करथले कंप्यूटर आस परियो नै काम केमित हबो आई एम टेकिंग लॉन्ग बैक 70s or 80s when there is introduction of computer in banks there is a huge resistance by the employees जेतबे बैंक रे कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करा गला सेतबे कर्मचारी माने बहुत विरोध कर से तांगे चाकरी पळेबो की कंप्यूटर यूज करिवो हमर तो ठीक चली चेक बॉय लिखवा एफडी लिखवा इत्यादि तो नाउ व्हाट इज द सिचुएशन यू अंडरस्टैंड वर्तमान कौन सिचुएशन एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज यूज्ड विथ आईसीटी इज एंटायरली कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग सिस्टम रे तमे पैसा उठाओ जा करो टोटल कंप्यूटराइज हे कंप्यूटर न देखले से क्लर्क तुमको पैसा दे परियो नाही तमरो डाटाबेस टा कंप्यूटर अच्छी से पैसा कटिगला तमे ऑनलाइन रे अपडेट कल पासबुक यू विल गेट इन्फॉर्मेशन सो ओरिजिनली देयर इज रेजिस्टेंस नाउ most of the employees and people have adapted this दीटा जगह रेजिस्टेंस होतला कोठू कर्मचारी तरफ साधारण लोक तरफ मत किंतु आस्ते आस्ते लोक आईसीटी को ई गवर्नेंस को ग्रहण करी गलेनी आउ किछि चैलेंज नाही बा जहाँ अच्छी बहुत कम अच्छी ये दिस इज द ऑल अबाउट दिस चैप्टर रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर हाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर हैज बीन टोटली चेंज ड्रास्टिकली चेंज radically changed by the use of ICT information communication technology द्वारा केमिति ICT change है then you will see just my video is off because I am sitting here next हला सर सजेशंस कोन आसीबो कि क्वेश्चन रे सजेशंस तुम लिख परियो केमिति इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हे परियो कल्चर नेगेटिव जंतु कहली प्रथमे विरोध होतला आस्ते आस्ते लोक ग्रहण करेनी नंबर 1 नंबर 2 हला डिजिटल डिवाइड व्हाट इज डिजिटल डिवाइड ना लोक माने जो माने डिजिटली डिवाइड हमर डिवीजन इकोनॉमिक डिवीजन कोन गरीब धनी से वाला डिजिटल डिवाइड हम देखले ऑनलाइन क्लास बेले जो मानकर गरीब पिला फोन नाही
बा ग्रामांचल पिला नेट कनेक्टिविटी नहीं से ऑनलाइन क्लास अटेंड कर पारे तांकर नेट पाइलानी एक तो पैसा नथला नेट नहीं फोन नहीं सी गोटे एस्पेक्ट पैसा थाई कि फोन थाई कि नेट नहीं गाँ अंचल नेट लागलानी क्लास करूच मझे मझे कटिगला सो दिस इज कॉल्ड डिजिटल डिवाइड ये डिजिटल डिवाइड साधारण लोक कौन बुझे से जाइए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वेबसाइट रे देखिबो गोटे जिलार कौन कौन अच्छी केबे अप्लाई करिया पड़ो से जनसेवा केंद्र को जीव जनसेवा केंद्र रे तार एक्सप्लॉइटेड हवार संभावना अच्छी सो ये सजेशन तुम दे पार है तापर रूरल डेवलपमेंट नेक्स्ट चैप्टर है ये आरंभ करके सारी रूरल डेवलपमेंट केमी आईसीटी यूज कौन ये यू कैन गिव सजेशंस आईसीटी एप्लिकेशन इन एग्रीकल्चर वुमेन एम्पावरमेंट एग्जांपल लिया जाई पारे व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट ई पंचायत तुम जान ई पंचायत तो एग्रीकल्चर आईसीटी एप्लिकेशन केमी थब सपोज ए फार्मर कैन हैव एक्सेस गवर्नमेंट रो कौन लोन स्ट्रक्चर अच्छी कालिया योजना अच्छी बा लोन अच्छी बैंक रो कौन लोन अच्छी एटा आईसीटी रे जण जानि पारे व्हाट इज आर बा इंश्योरेंस कौन अच्छी बन्या बात्या मरुड़ी पोकमारा ये सब हो गला चाष नष्ट हो से इंश्योरेंस जदि कर पाइब गवर्नमेंट रो कौन सुविधा अच्छी दिस इज एप्लिकेशन ऑफ आईसीटी इन एग्रीकल्चर ये ह्यूज ये अच्छी मुझे जस्ट छोटे एग्जांपल बुझा से माने सेल्फ हेल्प ग्रुप जदि आईसीटी यूज हम वुमेन एम्पावरमेंट रे काम हम तेणु लोकों पाखरे ग्रामांचल रे पहुंचापी आईसीटी माध्यम सरकार प्रशासन अति सहजरे सूक्ष्म उपाय शीघ्र पहुंची पारे तेणु रूरल डेवलपमेंट आईसी एप्लिकेशन रे एमाने बहुत एडवांस होती कर्नाटक आंध्र आम एत जाइना आम भी आस्ते आस्ते गले तेणु बर्तमान से गुड़िक कौन आम ट्रेडिशनल कैपेबिलिटी की तुम देख स्मॉल एग्जांपल यू हैव टेलीफोन नाउ द रोड कंडीशन इन ओडिशा इज वेरी गुड आमर ओडिशा रे गोटे पॉजिटिव कथा है रोड कंडीशन बहुत भल कंक्रीट रोड प्राय सब जगह लगे आगुरी लोक जापे सीजनाल रोड थिला वर्षा दिन मूवमेंट हो पार नाला बर्तमान टेलीफोन करदे तुम घर पाखे मछवाला से सुना गहना भी गाँव में बिक्री होती है सीन तो दिस इज यूज ऑफ नॉट एक्जाक्टली आईसीटी बट यू कैन ओवर टेलीफोन यू कैन ऑर्डर टेलीफोन तुम व्हाट्सएप दुकानी मेसेज करदेल जे आम दरकार यह धरिक पड़े आस से सौदा पत्र माछ परिवा शाढ़ी लुगापटा गहना एवरीथिंग पहुँची गल अधिका पैसा पड़ू तुमको जीवाक पड़ो ना रूरल डेवलपमेंट पंचायत बीडीओ हूँ ग्राम जी पंचायत कर्मचारी हूँ अंगनवाड़ी दीदी हूँ ये सब आईसीटी यूज करे सांगे सांगे जाकि रूरल डेवलपमेंट आम अप्लाई कर 2-3 days रे हो एप्लिकेशन एग्रीकल्चर कौन हम गोटे एग्रीकल्चर इनफॉरमेशन सिस्टम अच्छी एग्रीकल्चर समस्त इनफॉरमेशन रहे है तो एजुकेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्किंग होगा सब चाषी मानक आम नेटवर्किंग करदे गोटे ब्लॉक से सांगे सांगे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जोटा तुमको कहली डिसीजन टे ब्लॉक बीडीओ बा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर जो अच्छा डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर से नहीं गले सांगे सांगे निष्पत्ति जे कौन नहीं गले ना वर्तमान दर गोटे ब्लॉक रे कुआपथर माड़ होगा बैगण टमाटो इत्यादि चाष नष्ट हो इन्शुरांस कर गवर्नमेंट सेक्टर तो गवर्नमेंट इन्शुरांस दब तो केमी दब क्विकली कम्युनिकेट होगा तो आईसीटी यूज करके आम सांगे सांगे लोक मानक आम चाषी मानक हेल्प कर से भाया गोटे अच्छे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट से आम कर विलेज नॉलेज सेंटर जोटा ग्राम केन्द्र सब अच्छी से समस्त इनफॉरमेशन आम पाइपर तार तो रूरल डेवलपमेंट आईसीटी यूज हो पार बर्तमान जमी एमजीएनआरजी पेमेंट होना चेक रे बैंक रे तुम खाता को पड़े से आईसीटी यूज करे से भाया नारी सशक्तिकरण क्षेत्र में आईसीटी व्यवहार आम कर आगुरी जमी ये विभिन्न पॉलिसी थिला गुड़ाई तुम जापर केमिति माने महिला मानकर सशक्तिकरण हो पार अंगनवाड़ी दीदी मानकर सेल्फ हेल्प ग्रुप तांकर ऑनलाइन पेमेंट हो गला से माने लोन पाइगले गवर्नमेंट रो विदाउट इंटरेस्ट लोन हाउ दे मैनेज तांकर प्रोसीडिंग द्वारा सपोज गोटे एग्जांपल लियो जदि सब सेल्फ हेल्प ग्रुप को कंप्यूटर दिगला तांकर जो प्रोसीडिंग है मीटिंग रो विवरणी है मिनिट्स से कंप्यूटर रे सेव कर सांगे सांगे अपलोड करदे कौट की वेबसाइट रे ब्लॉक किया आम से स्टेज को जाइना चलीगले यहाँ आहरी सुविधाजनक हम जदि एजुकेटेड वुमेन आसीगले से कंप्यूटर यूज करेंगे ताहले सेल्फ हेल्प ग्रुप कनेक्टिविटी आहरी क्विक फास्टर हम देन वी कैन सजेस्ट हाउ दर स्कूल सिस्टम अच्छी गोटे स्कूल अटेंडेंस टा ऑनलाइन हो पिला माने केते आछुंती टीचर माने केते आछुंती स्कूल ले सफिशिएंट ड्रिंकिंग वाटर अच्छी कि नहीं चेयर टेबल अच्छी कि नहीं लाइब्रेरी अच्छी कि नहीं इफ जब कनेक्टेड आम करदे ताको मॉनिटरिंग करी हबो
ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମଟା ଆହୁରି ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ। ସେ ହେଲ୍ଥ ସିଷ୍ଟମ ହଉ, ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ହଉ, କମ୍ୟୁନିକେସନ ସିଷ୍ଟମ ହଉ, ହ୍ୟୁମାନ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ହଉ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ହଉ, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦି ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ହଉ, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ରୁରାଲ ଏରିଆ। ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ସାର୍ବିକ ବିକାଶ ପାଇଁ, ଏଇଥିରେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ, ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ହେଇପାରିବ। ଆଇସିଟିର ୟୁଜ୍ ପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଫର୍ଦର ସଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବା ଯେ କେମିତିଟା ହେଇପାରିବ। ଓକେ, so this is all substance of application of ICT in rural development. Okay, I hope you have understood. You can take the examples of Andhra Pradesh, of Odisha, of Karnataka, of Maharashtra, of Bengal. There are so many models of application of ICT in rural areas. ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାର ଗୋଟେ କନସେପଚୁଆଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କ କରିକି ମଡେଲ କରିକି ତାକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମଡେଲ ଅଛି, ସେ ଚାପ୍ଟର ଏଇ ଚାପ୍ଟର ତମେ ଦେଖିଦବ, I need not go through that. So that is the next chapter. I think I should finish with this. I've started at 5:30. By 7 I will finish. I'll go for a. So PRIs. What is PRIs? Panchayat Raj institutions. How this governance of PRIs can be effective through the use of ICT. Panchayat Prasasana. So we have 3 Panchayat Raj institutions. You know, one is Gram Panchayat, one is Panchayat Samiti, one is Zilla Parishad. Zilla Parishad is at the district level, Gram Panchayat is at the Panchayat level, and the middle tier is Panchayat Samiti at the block level. So what is the role and function of Panchayat Raj institutions? You know, we are not concerned about this here. We are concerned about how ICT can be helpful for effective governance system in Panchayat Raj. Panchayat Raj ର ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇସିଟିଟା ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାଟା କିପରି ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରେ ସେଇଟା ତମେ ଆମେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ପଢିବା। So I think I should not continue with this chapter. ମୋର କାଲି ଅଛି ନା ହଁ ସାର୍ କାଲି ଅଛି। କାଲି ଅଛି, ତାପରେ ନାହିଁ ବୋଧେ 6th ରେ ଅଛି, ତାପରେ କାଲି 3 ହଁ ତାରିଖ ସାର୍ 4-5 ଛୁଟି ଅଛି ବିକଜ ସଣ୍ଡେ और मंडे I know what is Monday ଟା କଣ ସେଟା ତେଜାଣି ଦିଟା ସାର୍। ଦିଟା କ୍ଲାସ ରେ ଆମେ ତ ସାରିବା ତ I can finish it here. Okay, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବି ସାର୍ ଟିକେ ନା କଣ? ଭିଲେଜ ନଲେଜ ସେଣ୍ଟର ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଯୋଉ ଭିଲେଜ ନଲେଜ ସେଣ୍ଟରଟା କଣ, ସେଠି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କେନ୍ଦ୍ର, ରିସୋର୍ସ ସେଣ୍ଟର। ସେଇଥିରେ ଅନଲାଇନ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ସବୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସେବା ସେଠି ଉପଲବ୍ଧ ହଉଛି, ତାର ଆଇସିଟି ୟୁଜ ଯୋଉଟା ଅନଲାଇନ ହଉଛି ସେଥିରେ ତାର ନେଇପାରିବ ହେଲା। ତ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ନଲେଜ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, MIS ଭଳିଆ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ ସିଷ୍ଟମ ଭଳିଆ। ସେ ନଲେଜ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ପାଇବେ ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ହେଲା। ତ ସେ ବାସଗୃହ ହଉ, ଭତ୍ତା ହଉ, ବା ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେଥିରେ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସେ ତା ନାଁଟା ସେଥିପାଇଁ ହେଇଛି ନଲେଜ ହେଲା। ଓଡ଼ିଆରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର ବା ସମ୍ବଳ କେନ୍ଦ୍ର, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ନାଁଟି ହେଇଛି। ତ PRI ରେ ପଢିଲା ବେଳେ ସେଟା ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଭିଲେଜ ନଲେଜ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ହେଲା। ଓକେ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ହଁ। Thank you, sir.